So now we have developed the generic methodology for analysis of amplifiers. Let's now see what are the basic amplifier configurations possible. Since BJT is a three-terminal device, there are three basic topologies possible, जिनमें से दो एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देखी हैं, कॉमन एमिटर की, कॉमन बेस की, एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट कॉमन is of common collector amplifier. Common collector amplifier की तीसरी possibility है. So it depends कि AC equivalent circuit को देखते हुए कौन सा terminal grounded है. If the emitter terminal is grounded in AC equivalent circuit, you call the topology common emitter amplifier. If the base terminal is grounded in the AC equivalent circuit, you call it the common base amplifier. If the collector terminal is grounded in the AC equivalent circuit, you call it a common collector amplifier. यहाँ पर जहन में रखिए कि this is all reference to AC equivalent circuit. आपने complete amplifier circuit नहीं देखना. Complete amplifier circuit is the circuit where you have both DC and AC present, which is the actual amplifier circuit that you implement in the hardware. आपने just AC equivalent circuit के basis पे decision लेना है. AC equivalent circuit is a circuit where DC sources have been suppressed and capacitors have been short circuited. So look at the AC equivalent circuit and make a decision whether it's a common emitter amplifier or a common base amplifier or a common collector amplifier. So common emitter amplifier, as the name indicates, इसमें emitter terminal is common or emitter terminal is grounded. So emitter terminal is grounded. For common base amplifier, you have the base terminal grounded. इन दोनों की examples अभी हमने देखी भी हैं. Common collector amplifier के case में you have collector terminal grounded. Again, let me re-emphasize that this is all reference to AC equivalent circuit. So AC equivalent circuit को देख के आप ये decision करते हैं कि whether it's a common emitter topology, common base topology or common collector topology. तो अभी हम इनको तीनों को की examples दोबारा देखेंगे and we will make a comparison कि किस तरह के characteristics हैं in different topology. कि एक general idea हम लेना चाहेंगे कि किस amplifier topology का कौन सा characteristic बेहतर है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने गेन की बात की थी कि गेन इज नेगेटिव इन कॉमन एमिटर टोपोलॉजी एंड वी हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट गेन इज पॉजिटिव फॉर अ कॉमन बेस एम्पलीफायर. तो सिमिलरली इस तरह के और कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के लिए देखेंगे. सो अगेन ईच ऑफ दीज कॉन्फ़िगरेशंस इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग वन ऑफ द थ्री बीजेटी टर्मिनल्स टू ग्राउंड एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्राउंडिंग वन ऑफ द टर्मिनल्स the remainder is a two-port network. और वो two-port network आपके पास बचता है, उसमें से एक टर्मिनल पेयर पे आप इनपुट अप्लाई कर देते हैं और एक टर्मिनल पेयर पे आप आउटपुट ले लेते हैं. So these are the three basic topologies possible. Common emitter के केस में emitter terminal is grounded, input is applied at the base terminal, output is taken at the collector terminal. नोट करें इस सर्किट में कोई आपको DC बायसिंग नहीं नजर आ रही. It is because this is AC equivalent circuit. कॉमन बेस टोपोलॉजी देखें. कॉमन बेस टोपोलॉजी के केस में बेस टर्मिनल इज ग्राउंडेड. बेस को आपने ग्राउंड किए. इनपुट इज अप्लाइड एट द एमिटर टर्मिनल एंड आउटपुट इज टेकन एट द कलेक्टर टर्मिनल. सो दिस इज द कॉमन बेस टोपोलॉजी. कॉमन कलेक्टर का क्या मतलब है? अगेन यू लुक एट द AC equivalent circuit and if you observe that the collector terminal is grounded, you call it common collector topology. कॉमन कलेक्टर टोपोलॉजी का एक और नॉमेनक्लेचर भी लिटरेचर में ऑफ्टन यूज होता है एंड दैट इज कॉल्ड एमिटर फॉलोअर. भी हम आगे देखेंगे. इस केस में बेसिकली आप इनपुट जो अप्लाई करते हैं, आउटपुट फॉलोज द इनपुट. ये सॉर्ट ऑफ इसकी एप्लीकेशन भी, इसमें एज सच गेन आपको नहीं मिलता. ये नॉर्मली वोल्टेज बफर के तौर पे यूज़ करते हैं. वी विल टेक अ लुक एट दोज डिटेल्स लेटर ऑन. अभी जस्ट आप ये जहन में रखें कि व्हेन यू लुक एट द AC इक्विवेलेंट सर्किट, अगर आपको AC इक्विवेलेंट सर्किट में इस तरह की चीज़ नज़र आती है कि कलेक्टर इज ग्राउंडेड, इनपुट हैज़ बीन अप्लाइड एट द बेस टर्मिनल एंड आउटपुट इज टेकन एट द एमिटर टर्मिनल, तो दैट टोपोलॉजी इज कॉल्ड अ कॉमन कलेक्टर टोपोलॉजी और एमिटर फॉलोअर. So these are the three basic topologies that we have. कॉमन एमिटर की एक और वेरिएशन भी हम देखेंगे जिसमें हम एमिटर पे एक ग्राउंड लगाते हैं, एमिटर पे एक और एडिशनल रेजिस्टर प्लेस करते हैं, तो वो एग्जैक्टली कॉमन एमिटर नहीं रहती, उसको हम कहते हैं कॉमन एमिटर विद
RE. We'll see that incorporating a resistor here has certain advantages. So it's a variation of common emitter, and it is not exactly common emitter क्योंकि उसमें emitter is not grounded, बल्कि instead आप emitter terminal के ऊपर एक resistor लगा के उसके through से ground करते हैं. But still input is applied at the base terminal and output is taken at the collector terminal. So in that sense, it's a variation of common emitter and we call it common emitter with RE. So we will see that it gives us better control of gain versus input resistance. अभी हम इसकी later on बात करेंगे. So again, the point that you need to keep in mind is that we look at AC equivalent circuit to determine what amplifier topology that particular circuit is. It can be a common emitter topology, a common base topology, and it may be a common collector topology. कॉमन emitter की बात हमने कर ली, कॉमन बेस भी हो गया, कॉमन कलेक्टर की भी हमने डिस्कस कर लिया कि कॉमन कलेक्टर में when you look at the AC equivalent circuit, you will find out that the collector terminal is grounded, input is applied at the base terminal, and output is taken at the emitter terminal. So that gives you the common collector amplifier topology. Okay, let's now establish that आपके पास multiple amplifiers हैं. You want to quantify which one is better from the other one. कौन सा उनमें से बेहतर है? आपके पास 3 amplifier हैं, 4 amplifier हैं, and you want to characterize, you want to quantify which one is better than the others. So to do that, we must have some tangible parameters. कोई parameters होने चाहिए जिनकी basis पे हम देखेंगे कौन सा amplifier बेहतर है, हम उसको quantify कर सकेंगे. This amplifier is better in that sense from another amplifier. So let's see how exactly we can characterize amplifiers. What are the key parameters that we need to determine so that we can make a comparison and we make a logical conclusion that this particular amplifier is better than the other one. So इस context में let's have this block diagram. So ये हम amplifier के लिए एक symbol use कर रहे हैं. So amplifier की कोई input है, amplifier की कोई output है. Amplifier को excite करने के लिए हमें कोई signal source चाहिए. एम्पलीफायर के आउटपुट लेने के लिए हमें कोई लोड चाहिए. ठीक है, सिग्नल सोर्स को हमने यहाँ पर शो किया बाय दिस थेवेनिन इक्विवेलेंट. किसी भी वन पोर्ट नेटवर्क को आप एक थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो वी सिग्नल, आर सिग्नल इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ योर सिग्नल सोर्स. सो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑडियो एम्पलीफायर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दिस में बी अ माइक्रोफोन. ये कोई माइक्रोफोन है जिसका थेवेनिन इक्विवेलेंट है. वी सिग्नल, आर सिग्नल में बी सम माइक्रोफोन. And in the context of again audio amplifier, this load may be a loudspeaker जिसको आप ड्राइव करना चाह रहे हैं. So माइक्रोफोन में बात कर रहे हैं और लाउड स्पीकर को ड्राइव करना चाह रहे हैं. So input may be some physical source like this microphone. Output RL is maybe some loudspeaker. और अगर आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है तो this input may be the output equivalent circuit of the preceding amplifier. And similarly अगर आपका कैस्केड में मल्टीपल एम्पलीफायर्स कनेक्टेड हैं तो दिस RL may be input resistance of the next amplifier stage. So it depends on the context कि इनका क्या मीनिंग है, but these will represent the source by this Thevenin equivalent V signal, R signal, and the load को हम इस resistance RL से represent करेंगे. और बीच में एम्पलीफायर है. सो आपने कोई इनपुट अप्लाई करनी है, उसको एम्पलीफाई करना है और किसी लोड को आपने ड्राइव करना है. सो दैट्स द बेसिक आइडिया कि आपने ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ अचीव करनी है. सो एम्पलीफायर इज फेड विद अ सिग्नल सोर्स जिसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट वी सिग्नल, आर सिग्नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वोल्टेज सोर्स कैन बी एन एक्चुअल सिग्नल सोर्स. फॉर एग्जांपल जैसा माइक्रोफोन की मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ अगर आप लैब में यूज़ कर रहे हैं, लैब सेटअप में, तो जो आपका फंक्शन जनरेटर है दैट में बी रिप्रेजेंटेड एज द सिग्नल सोर्स एज सम थेवेनिन इक्विवेलेंट. और अगर मल्टीपल एम्पलीफायर्स कैस्केड में आपने कनेक्ट किए हुए हैं कि एक की इनपुट दूसरे, एक की आउटपुट दूसरे के इनपुट एंड सो ऑन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन अ कैस्केड एम्पलीफायर दिस वी सिग्नल, आर सिग्नल मे बी द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द आउटपुट सर्किट ऑफ द प्रीवियस एम्पलीफायर स्टेज. Load RL can be the actual load, for example a loudspeaker, or it may be the input resistance of
द नेक्स्ट एम्पलीफायर स्टेज। कैस्केडेड के केस में नेक्स्ट एम्पलीफायर स्टेज की इनपुट को भी हम आरएल से मॉडल कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये अपने ये बेसिक पॉइंट है कि दिस इज बेसिकली द सिग्नल सोर्स, दिस इज बेसिकली द लोड एंड दिस इज द एम्पलीफायर. So signal source is actually not part of the amplifier. Signal source is naturally separate from the amplifier. वो एक अलग फिजिकल सोर्स है जिससे आप एम्पलीफायर को ड्राइव कर रहे हैं. Similarly, load, for example, loudspeaker is not part of the amplifier circuit. It is a load that you need to drive by that particular amplifier. So इस एम्पलीफायर को किस तरीके से मॉडल किया जा सकता है? एम्पलीफायर को मॉडल किया जा सकता है इस किस्म के सर्किट से. सो ये आपके पास एम्पलीफायर का मॉडल है. इसमें क्या क्या शामिल है हमने किया. नेचुरली इसमें गेन शामिल किया क्योंकि आपको गेन चाहिए. एम्पलीफायर का बेसिक जॉब है कि आउटपुट इज रिलेटेड टू इनपुट एंड देयर इज सम आउटपुट इज मैग्नीफाइड रेप्लिका ऑफ द इनपुट सिग्नल व्हिच मींस देयर इज सम गेन टर्म जो कि यहाँ पर हमने AV नॉट से शो की है. देयर मस्ट बी सम इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दैट एम्पलीफायर. इनपुट रेजिस्टेंस क्या इंडिकेट करेगी कि वो आपके सिग्नल सोर्स को कितना लोडिंग का इफेक्ट देता है, कितना करंट ड्रॉ करेगा एम्पलीफायर एट इट्स इनपुट फ्रॉम द सोर्स. नेचुरली इट हैज़ टू बी स्मॉल. आपने जिस तरह फॉर एग्जांपल माइक को अगर आपने माइक्रोफोन से आपने स्पीकर को ड्राइव करना है और ये RN इस तरह की है कि स्पीकर जितने करंट ड्रॉ करती है, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग एन एम्पलीफायर देयर क्योंकि वो तो लोडिंग इफेक्ट आपने मिनिमाइज किया ही नहीं है. सो आइडियली RN शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. आइडियली RN शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल ताकि मिनिमल लोडिंग करे वो आपके सिग्नल सोर्स पे. सिग्नल सोर्स इट इज़ डिज़ायरेबल कि सिग्नल सोर्स से कम करंट ड्रॉ किया जा सके. फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन ज़्यादा करंट आपको प्रोवाइड कर भी नहीं सकता. सो एम्पलीफायर की जॉब ही ये है कि वो माइक्रोफोन और स्पीकर के बीच में इस लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करे, एट द सेम टाइम एक मैग्नीफाइड रेप्लिका ऑफ इनपुट को प्रोड्यूस करे एट द आउटपुट. कैपिटल R0 इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर. सो ये एम्पलीफायर की आउटपुट रेजिस्टेंस है. सो यहाँ पर आप इस सर्किट पे गौर करें तो यू कैन सी दैट कि आपके पास दो वोल्टेज डिवाइडर्स बन रही हैं. वन एट द इनपुट कंप्राइजिंग ऑफ R सिग्नल एंड RN एंड द अदर वन इज एट द आउटपुट कंप्राइजिंग ऑफ कैपिटल R0 एंड कैपिटल RL. सो ओवरऑल अगर आप गेन की बात करें V आउट ओवर V सिग्नल की तो उसमें ये ना सिर्फ एम्पलीफायर एक रोल प्ले कर रहा है, गेन कर रहा है, ये वोल्टेज डिवाइडर्स भी उस गेन को ओवरऑल रिड्यूस कर रही हैं. सो यू हैव टू वोल्टेज डिवाइडर्स इन्वॉल्व्ड एंड फॉर एन आइडियल एम्पलीफायर यू वुड लाइक के ये दोनों वोल्टेज डिवाइडर्स का इफेक्ट जो है मिनिमाइज हो जाए. सो फॉर एन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर इट इज Rin will be as large as possible, ideally approaching to infinity, and capital R0 will be as small as possible, ideally approaching to 0. अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो भी हम आगे देखेंगे तो these voltage dividers effect will be eliminated completely. So this is an ideal condition, and practically speaking Rn should be as large as possible and capital R0 should be as small as possible. So हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस एम्पलीफायर को अगर आपने कैरेक्टराइज करना है तो द एम्पलीफायर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. बाय वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स क्योंकि एम्पलीफायर के केस में की रिक्वायरमेंट है कि V आउट ओवर V आई शुड बी सम रीजनेबल नंबर ताकि आपको एक मैग्नीफाइड रेप्लिका मिल सके आउटपुट पे ऑफ द सेम इनपुट सिग्नल V आई. सो इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. एडिशनली इसने इनपुट को लोड करना है, इनपुट पे एक लोडिंग इफेक्ट आना है इस एम्पलीफायर की वजह से, विच मीन्स के इनपुट सोर्स से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है दैट इज बीइंग कन्वेड थ्रू दिस रेजिस्टेंस कैपिटल Rin. और उसके बाद क्वेश्चन ये है कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर का कितना इम्पैक्ट है एंड दैट इज डिटरमिन्ड बाय दिस आउटपुट रेजिस्टेंस कैपिटल R0. Ideally Rin should be as large as possible. The resistance looking into the amplifier capital Rin should be as large as possible, and the resistance looking into the output port with input port input source suppressed should be as small as possible. So Rin की infinity value is the ideal value and capital R0 approaching to 0 is the ideal value for capital R0. So input resistance basically indicates the loading effect of the amplifier. और इनपुट रेजिस्टेंस को निकालने का क्या तरीका होगा जो कि भी हम आगे अप्लाई करेंगे डिफरेंट एम्पलीफायर टोपोलॉजीज पे, कॉमन एमीटर पे, कॉमन बेस पे, कॉमन कलेक्टर पे.
तरीकाकार ये होगा कि आप एम्पलीफायर की इनपुट पोर्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. You will remove the practical signal source, R signal and V signal, and directly apply a test source here at the input port and perform the analysis and determine कि इसको क्या input resistance नज़र आ रही है. That will give you the value for in a practical amplifier setting. तो practically जब आप BJT से amplifier बना रहे होंगे उसकी analysis करनी होगी, तो you will apply a test source at the input port. You will identify the input port of the amplifier. You will remove the practical source comprising of Thevenin equivalent V signal and R signal. You will apply the test source there and determine कि कितना current वो test source draw कर रहा है. And you will take this relation Rin is equal to Vi divided by I in and determine the value of that Rin. तो ये आपके पास आ जाएगा input resistance. So input resistance इस सोर्स के साथ किस तरह रिलेटेड है वो आपको ये वोल्टेज डिवाइडर बता रहा है. सो यू हैव वन वोल्टेज डिवाइडर हियर जो कि आपको बता रहा है कि वी आई इज इक्वल टू आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर सिग्नल टाइम्स वी सिग्नल. अब क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वी सिग्नल का कितना पोर्शन वी आई पे ट्रांसलेट हुआ है. आइडियली इसकी वैल्यू 1 है कि वी आई इज इक्वल टू वी सिग्नल. लेकिन अगर आपका लोडिंग का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है तो यू विल सी कि ये एक स्मॉल पार्ट ट्रांसलेट होगा वी सिग्नल का वी आई के ऊपर. आइडियली वी वुड लाइक दिस वैल्यू अप्रोचेस टू 1. आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर सिग्नल इज अप्रोच टू 1. तो यहाँ पर ज़रा देख के बताइए, सिंस आर सिग्नल इज पार्ट ऑफ द सोर्स और नॉर्मली आपको गिवन होगा कि इस माइक्रोफोन के लिए सर्किट को डिज़ाइन करें. सो आर सिग्नल की वैल्यू आपके हाथ में नहीं होगी, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. आर इन आपका डिज़ाइन पैरामीटर एम्पलीफायर का जिसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं. सो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि ये लिमिट आर इन को की क्या वैल्यू हो, तो ये दिस लिमिट अप्रोचेस टू 1. आर इन की क्या वैल्यू होनी चाहिए इस रिलेशन की मदद से कि दिस लिमिट अप्रोचेस टू 1. जी क्या यहाँ से आप बता सकते हैं? आर इन शुड अप्रोच टू व्हाट for this relation to be true? Very large. Very large, right? जब ये R in very large होगी तो that means कि R in is very large, numerator is very large and also denominator is a very large number plus a small number. A very large number at the numerator and then we have a very large number plus a small increment at the denominator. So that will be approaching to 1. So ideally limit R in approaching to infinity. So इसको देखने का क्या तरीका है? आप कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में एक बहुत लार्ज नंबर है और डिनोमिनेटर में भी एक बहुत लार्ज नंबर है. फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर में कोई लेट्स से 100 किलो ओम्स है और डिनोमिनेटर में यू हैव 100K प्लस लेट्स से 1K. सो दिस विल ऑलमोस्ट अप्रोच टू यूनिटी. दूसरा तरीका ये है कि आप मैथमेटिकली इसको अप्रोच कर लें. So mathematically approach करने के लिए just divide the numerator and denominator by Rn. You have 1 plus R signal by Rn. So now you can feed this Rn approaching to infinity here and you can see that कि Rn approaching to infinity है तो this term will approach to 0 and you get 1. So what we are saying कि to eliminate the effect of this input voltage divider, ideal value of Rn is infinity. तो अगेन आप यहाँ पर ये भी कह सकते थे कि यार आर सिग्नल को मैं ये सेट कर देता हूँ वो सेट कर देता हूँ, बट दैट इज़ यूजुअली नॉट रिकमेंडेड बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर माइक्रोफोन के लिए कहा जा रहा है कि ये एम्पलीफायर बनाएं. सो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये माइक्रोफोन मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा माइक्रोफोन दो. तो यू विल एक्चुअली एडजस्ट द पैरामीटर्स ऑफ द एम्पलीफायर इंस्टेड. आप कहेंगे ये माइक्रोफोन मेरे पास गिवन है, इसके लिए ये आर इन अगर मैं रख लूँ तो आई विल मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट एंड आई विल गेट अ सक्सेसफुल एम्पलीफायर. तो सिमिलरली आउटपुट पे देखिए, आउटपुट पे भी एक वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पर आपके पास बन रहा है. सो आउटपुट पे भी एक वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है. तो इसमें भी अगेन हम ये नहीं कह रहे कि आर एल को मैं एडजस्ट करूँगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आर नॉट को एडजस्ट करूँगा. अगेन जो लाउड स्पीकर आपको कोई लेट से गिवन है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि लाउड स्पीकर आप चेंज करना शुरू हो जाए, आप उस लाउड स्पीकर के लिए एम्पलीफायर को डिज़ाइन करें और देखें कि इस कैपिटल आर नॉट को आप कितना मिनिमाइज कर सकते हैं टू गेट रीजनेबल रिजल्ट्स.
सो AV नॉट जो यहाँ पर हमने शो किया हुआ, AV नॉट इज कॉल्ड द ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, एंड AV नॉट इज डिफाइंड एज AV नॉट इज डिफाइंड एज AV naught is defined as V out over VI when RL is infinity. सो हम AV नॉट डिफाइन करते हैं जब RL इन्फिनिटी है, और इन अदर वर्ड्स हम कह रहे हैं कि यार अभी हम वोल्टेज डिवाइडर का इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, हम जस्ट देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की क्या कैपेबिलिटी है, ये कितना गेन प्रोड्यूस कर सकता है. सो वी विल लेटर ऑन कंसिडर द इफेक्ट ऑफ लोड, के लोड को चेंज करेंगे तो उससे क्या चेंज आएगी, बट फॉर द मोमेंट वी जस्ट टेकिंग एन आइडिया कि इस BJT एम्पलीफायर का क्या कैपेबिलिटी है, कितना गेन ये प्रोड्यूस कर सकता है. So in that case, you will replace RL by an open circuit and see कि क्या आपके पास आउटपुट आ रही है. तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दें तो there is no current flowing through this capital R naught, and V out is equal to AV naught VI, and V out over VI is equal to AV naught. But this is only true when you have replaced RL by an open circuit, or you mathematically say that RL is infinity. So सिर्फ उस केस में ये ट्रू है. So AV naught is the open circuit voltage gain and is defined by this particular relation. AV naught is V out over VI when RL is approaching to infinity. So what about the actual gain? Actual gain हम उसे कहेंगे AV. So AV is the gain when RL is part of the circuit. AV is the gain when RL is part of the circuit, and this is what we are usually interested in. सो AV के केस में ना सिर्फ AV नॉट का इफेक्ट है, बल्कि इस आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर का इफेक्ट भी AV में आपको नजर आ रहा है. सो लेट्स सी कि AV आपके पास क्या आएगा यहाँ पर. यहाँ पर देखिए, इस पे अगर हम वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करें तो वी कैन सी दैट के V out over VI. नाउ RL इज पार्ट ऑफ द सर्किट. अब RL के साथ हम बात कर रहे हैं. सो V out over AV नॉट VI, ये वोल्टेज डिवाइडर मैं RL के क्रॉस अप्लाई कर रहा हूँ. सो RL डिवाइडेड बाय RL plus R naught. So what we are saying is कि V out over VI, जिसको हम AV से डिफाइन कर रहे हैं, so AV is V out over VI is equal to AV naught times RL divided by RL plus R naught. So क्या फर्क हुआ इन गेन्स AV नॉट और AV में? AV नॉट में हम जस्ट एम्पलीफायर की कैपेबिलिटी देख रहे थे विदाउट द आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर. So AV नॉट जस्ट इंडिकेट के दिस इज द कैपेबिलिटी. बाकी आप देखेंगे कैपिटल R नॉट आपने क्या सेट किया है और कैपिटल RL आपको क्या गिवन है. सो बट AV नॉट विल गिव यू सम जेनेरिक आइडिया कि अगर आप कैपिटल R नॉट अच्छा चूज करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम दैट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर BJT सर्किट. सो AV इज AV नॉट टाइम्स द वोल्टेज डिवाइडर आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर इफेक्ट. AV नॉट टाइम्स आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर इफेक्ट. नेचुरली अगर आप कैपिटल R नॉट आपका 0 है, इफ capital R naught is equal to 0, then AV is equal to the maximum capability of the amplifier. AV is equal to AV naught. लेकिन अगर कैपिटल R naught की वैल्यू 0 नहीं है, कोई और फाइनाइट वैल्यू है, तो फिर इस आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर का इफेक्ट आपको नजर आएगा एंड AV विल बी स्मॉलर देन AV नॉट. सो ये हमने अभी क्या देख लिया? हमने देख लिया कि ट्रांजिस्टर की बेसिक कैपेबिलिटी क्या है, कैपिटल AV नॉट, एंड देन वी सेट के गेन जो है विद आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर इफेक्ट वो क्या आएगा. लेकिन आपका एक इनपुट वोल्टेज डिवाइडर भी है. आप एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि V out over V सिग्नल क्या है, एंड V out over V सिग्नल नॉट ओनली इंक्लूड द आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर इफेक्ट बट ऑल्सो द इनपुट वोल्टेज डिवाइडर इफेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड GV. सो GV इज द ओवरऑल गेन V out over V सिग्नल. सो GV ये बता रहा है कि ये V out इस V सिग्नल के साथ किस तरह रिलेटेड है, एंड टू एंड टोटल गेन आपका कितना है. सो इसको निकालने के लिए सिंस वी हैव ऑलरेडी वर्कड V out over VI, हमने ऑलरेडी वर्किंग कर ली है. सो लेट्स री राइट इट एज, ये देखिए यहाँ पर VI और VI कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये सेम एक्सप्रेशन है V out over V सिग्नल. सो वी कैन राइट GV एज V out over VI times VI over V सिग्नल, और वी कैन राइट इट एज AV times VI over, we can write it as AV times VI over V signal, or we can write it as VI over V signal times AV naught times RL divided by RL plus R naught.
ठीक है। तो ये आपका, इसको हम GV से डिनोट करेंगे। ये टर्मिनोलॉजी अपने जहन में रखनी है कि AV0 का क्या मतलब है, AV का क्या मतलब है और GV का क्या मतलब है, और उस हिसाब से हम एम्पलीफायर की एनालिसिस आगे करेंगे। सो यहाँ पर देखिए VI ओवर V सिग्नल आपके पास क्या आएगा। लुक एट दिस सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VI ओवर V सिग्नल। बेसिकली इट्स VI ओवर V सिग्नल बेसिकली इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ इनपुट वोल्टेज डिवाइडर, राइट। इनपुट वोल्टेज डिवाइडर का इफेक्ट जो है वो कन्वे हो रहा है यूजिंग दिस VI ओवर V सिग्नल। वी आर गेटिंग द इफेक्ट ऑफ इनपुट वोल्टेज डिवाइडर। सो लेट्स टेक अ लुक। यहाँ पर देखिए इस इनपुट वोल्टेज डिवाइडर को अगर आप कंप्यूट करें और उसमें बेसिक वोल्टेज डिवाइडर के रिलेशन लगाएं, तो VI ओवर V सिग्नल इज आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर सिग्नल। सो आपके पास GV आ गया, ये आपके पास GV की एक्सप्रेशन चल रही है। सो GV इज VI ओवर V सिग्नल, इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर सिग्नल times the maximum capability that particular amplifier can provide, AV0 times output voltage divider effect। ठीक है। तो GV जो है टोटल कम्युलेटिव आपका इफेक्ट है, उसमें ना सिर्फ एम्पलीफायर की कैपेबिलिटी शामिल है बल्कि इनपुट वोल्टेज डिवाइडर का इफेक्ट भी आपको नजर आ रहा है और आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर का इफेक्ट भी नजर आ रहा है। सो अगेन इसको दोबारा एम्फेसाइज कर लेते हैं। AV0 इज V out over VI when RL is approaching to infinity. So you are saying कि AV0 के केस में ना इनपुट वोल्टेज डिवाइडर का इफेक्ट है ना आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर का इफेक्ट है। AV0 को देख के you can just have an idea कि what is the capability available to me using this particular amplifier topology. Then AV है, AV में इनपुट वोल्टेज डिवाइडर का इफेक्ट शामिल नहीं है लेकिन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर का इफेक्ट AV में शामिल है। So AV is V out over VI when RL is part of the circuit. इस केस में RL is part of the circuit, RL is connected at the output of the circuit. GV जो है आपके पास, GV के केस में you have both effects, the input voltage divider effect and the output voltage divider effect along with the maximum capability, maximum gain available जो कि इस एम्पलीफायर से अचीव किया जा सकता है। So GV is the total cumulative effect। और उसके अलावा हमने कैपिटल आर इन की बात की है कि वो आपको एम्पलीफायर कितना लोडिंग इफेक्ट दे रहा है एट द इनपुट, दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस कैपिटल आर इन। आई होप दिस इज ओके। ये ठीक है, ये क्लियर है, ये क्या मीनिंग है AV का, GV का, AV0 का, आर इन का। जी, इज दिस ओके? यस सर। कि अब फाइनल पैरामीटर जो भी हमने डिफाइन नहीं किया वो आपका कैपिटल R0 है। सो कैपिटल R0 को जब हम निकालेंगे प्रैक्टिकल एम्पलीफायर सर्किट में, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल रिमूव द लोड। अब देखिए हम एम्पलीफायर के वी विल रिमूव द लोड, क्योंकि लोड इज नॉट पार्ट ऑफ द एम्पलीफायर, सो हम RL को रिमूव कर देंगे। वी विल अप्लाई अ टेस्ट सोर्स at the output port. Test source can be a voltage source or a current source. So apply a test source at the output port। और टेस्ट सोर्स मेथड को आप रिकॉल करें। टेस्ट सोर्स मेथड में आप क्या करते थे, आप जिस पोर्ट पे टेस्ट सोर्स अप्लाई करते थे उसके अलावा बाकी तमाम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप सप्रेस कर देते थे। सो वी विल सप्रेस दिस सोर्स VI। हम अभी आर सिग्नल V सिग्नल की नहीं बात करेंगे। आप इमेजिन करें कि यहाँ पर आपने को पहले सोर्स लगाया हुआ था VI और अब उसको आपने सप्रेस कर दिया। सो जब आपने आउटपुट रेजिस्टेंस कैपिटल R0 निकाल ली, तो जो आपने स्टेप सबसे द फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव RL, which means replace RL by an open circuit. So instead of RL apply the test source। टेस्ट सोर्स को अप्लाई हम कर देते हैं, लेट्स से वो सोर्स VX है, and we will determine its current and also we are going to set VI equal to 0। so VI को हम equal to 0 भी सेट करेंगे। so these are the steps that we are going to follow to determine कि इस particular amplifier circuit की आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है। कैपिटल R0 इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। So these are the key parameters that we are usually interested in। थ्री टाइप्स ऑफ गेन्स हैं जो हम निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं, AV0, EV एंड GV। इनपुट रेजिस्टेंस हम निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं कैपिटल RN, और आउटपुट रेजिस्टेंस हम निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं कैपिटल R0। So these are the parameters that we need for any amplifier, whether that amplifier is based on a BJT,
whether that amplifier makes use of multiple BJTs, whether it use MOSFET, whether it use an op amp. जिस भी तरीके से amplifier implemented by, these are the parameters that we would like to determine, and these parameters will give us idea कि ये amplifier किस तरह का amplifier है, इसका कितना gain है, इसके कितना loading का क्या effect है, Rin कितना, output voltage divider का क्या effect है, capital R naught की क्या value है. So once we have these parameters, then we can quantify the problem, make a comparison which BJT amplifier is better than the other one, and so on. So let's apply this method. Let's determine these parameters for a common emitter amplifier, and let's see कि common emitter amplifier में इन parameters से किस तरह की value आती है. So let's consider common emitter amplifier. अभी हम just focus करेंगे AC equivalent circuits पे. Next week में हम practical DC biasing schemes को देखेंगे, and then we will combine the two and we'll see कि final आप किस तरह से overall analysis कर सकते हैं. Although overall analysis की examples हमने already भी की हैं. So अभी for the moment common emitter amplifier को हम study करेंगे, common emitter की एक variation को study करेंगे, common emitter with RE उसे हम कहते हैं. Then we will analyze the common base circuit, and then we will do the analysis of common collector amplifier topology. और इस सारी एनालिसिस में हम जस्ट उसके AC equivalent circuit से स्टार्ट करेंगे, और we will determine these different AC parameters including AV0, AV and GV, Rin and capital R naught. तो ये parameters हम निकालना चाहेंगे. So we'll start with AC equivalent circuit. ये देखिए इसमें आपको कोई DC biasing नहीं नजर आ रही, which means this is an AC equivalent circuit. And AC equivalent circuit के बाद next step हमारा होता है कि small signal model parameters, small signal equivalent circuits का draw किया जाए, and then the next step would be कि हम उसकी analysis करें और ये key parameters निकालें. So for the moment we are focusing on AC equivalent circuit. So previous steps भी हमें करने आते हैं, उसके हमने practice की भी है. You draw the DC equivalent circuit, you determine the small signal model parameters, and then you draw the AC equivalent circuit. तो ये आप समझ लें कि हम third step से onwards चल रहे हैं. So ये आपके पास common emitter topology है. Why I'm saying कि it's common emitter topology, because looking at this AC equivalent circuit, you can readily observe that here emitter terminal is grounded, input is applied at the base terminal, output is taken at the collector terminal. So यहाँ पर RL भी connected है, जो कि इसने बाकी बुक ने mention किया हुआ है, draw नहीं किया लेकिन mention किया हुआ है. So यहाँ पर RL भी connected है. So this is the complete this is the AC equivalent circuit that we need to analyze. ये यहाँ पर again आपका signal source है. So what is the first step here? First step हमारा क्या है? क्या हमने करना है पहला step? We need to make a decision whether to use pi model or T model. So which one is the preference for this topology? T model prefer करें या pi model को prefer करें? The pi model. यहाँ पर हमारा pi model is the preference. So pi model हम draw कर लेते हैं. We have इसको ठीक उधर draw कर लेते हैं. That would be more convenient. So let's draw the pi model here. So अभी हम common emitter की analysis कर रहे हैं. So pi model में हम interested हैं. So pi model is GM VBE, because we are talking about an NPN BJT. So GM VBE. R pi, the control parameter must be clearly mentioned in the small signal model. This is the emitter terminal, this is the base terminal, this is the collector terminal, and जिस तरह हमने बात की है कि by default we will always include small r naught unless specifically आपको प्रॉब्लम में कहा जाए कि ignore early effect या ignore base width modulation effect, या आपको दे दिया जाए कि VA is infinity, या आपको दे दिया जाए कि R naught is infinity. Otherwise by default you will include the early effect here. So ये emitter is grounded. आप step by step shift करते जाएं चीज़ों को. यहाँ पर आपके पास है R signal, ये आपके पास है V signal, and since this is an amplifier, this is an emitter, common emitter topology, so this must be the input.
Vi। बेस के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप इनपुट अप्लाई करते हैं कॉमन एमिटर टोपोलॉजी में, और यहाँ पर आपके पास RC भी कनेक्टेड है और RL भी कनेक्टेड है, एंड दिस नोड वोल्टेज इज V आउट। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट, जिसकी हमने एनालिसिस करनी है और सारी चीज़ें यहाँ पर डिटरमिन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आर एन। आर एन इस एम्पलीफायर की हम निकालना चाह रहे हैं, तो आर एन निकालने के लिए क्या तरीके है? आर एन के लिए यू विल आइडेंटिफाई द इनपुट पोर्ट ऑफ द एम्पलीफायर, जो कि आप देख सकते हैं कि ये, यू विल अप्लाई टेस्ट सोर्स एट दैट इनपुट एंड डिटरमिन द करंट ड्रॉन फ्रॉम दैट टेस्ट सोर्स। आई इन आपने डिटरमिन करना है। तो इसका मतलब क्या है कि चूंकि हम एम्पलीफायर के इनपुट पे निकालना चाह रहे हैं, तो अभी आप इस प्रैक्टिकल सिग्नल सोर्स कंप्राइजिंग ऑफ दिस थेवेनिन इक्विवेलेंट वी सिग्नल आर सिग्नल को डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसकी जगह एक टेस्ट सोर्स अप्लाई करेंगे, एंड सिंस इस पोर्ट के ऊपर वोल्टेज को आपने ऑलरेडी एक नाम दिया हुआ है, इसको वी आई आपने कहा हुआ है, so there is no point of giving the test source another name. Just call that test source Vi and determine the current drawn by that test source. So let me redraw this circuit according to ये जो भी हमने नीड मेंशन की है। तो हमने क्या है कि एम्पलीफायर की इनपुट पोर्ट आप आइडेंटिफाई करें, उस पोर्ट के ऊपर एक टेस्ट सोर्स अप्लाई करें, सिंस उस पोर्ट के ऊपर ऑलरेडी वोल्टेज का एक नाम आपने दिया हुआ है वी आई, सो वी कैन कन्वीनियंटली कॉल द वैल्यू ऑफ दैट टेस्ट सोर्स एज वी आई। उसके बाद आप बाकी सर्किट ड्रॉ कर लें, आर पाई, वीबीई, ये कंट्रोल पैरामीटर यहाँ पर वीबीई है, इट मस्ट बी मेंशन्ड, अदरवाइज आप एनालिसिस कर नहीं सकते। सो जीएम वीबीई, ये यहाँ पर आप नोट करें तो आर नोट का एक एंड इस नोट पे कनेक्टेड है और आर नोट का दूसरा एंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, विच मीन्स आर नोट इज ऑल्सो पैरेलल टू आर सी एंड आर एल। सो ये सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं, इसको ज़बरदस्ती ना पैरेलल कीजिएगा, जब एक्चुअली पैरेलल हों तो तब भी आप पैरेलल करें इसको। सो ये आपके पास सर्किट आ गया। So this is the circuit that we need to analyze. So this is V out and this is VI. One can observe from here that VBE is equal to VI. अब हम RN निकाल लेते हैं। So RN निकालने के लिए आपने क्या करना है? आपने देखना है कि टेस्ट सोर्स कितना करंट सोर्स कर रहा है। So that current is I in. So I in क्या है? I in के लिए यहाँ पर जस्ट एक ही बात है, राइट? So you can readily see that कि I in is equal to VBE divided by R pi, which implies that I in divided by VBE is equal to 1 over R pi. But we have noticed that VBE is equal to VI. So that implies VI over II is equal to R pi, which is equal to RN. तो पहला स्टेप हमने कर लिया, हमने इनपुट रेजिस्टेंस निकाल ली आर इन, एंड आर इन इज इक्वल टू आर पाई। ठीक है, पहला काम कर लिया, हमें पता लग गया कि आर इन जो है इट इज इक्वल टू आर पाई। नेक्स्ट स्टेप हम ए वी निकाल लेते हैं, जो कि आपका गेन है ए वी हम कैसे डिफाइन करते हैं? वी आउट ओवर वी आई एंड आर एल इज पार्ट ऑफ द सर्किट, आर एल इज कनेक्टेड इन द सर्किट, आर एल इज पार्ट ऑफ द सर्किट। सो ए वी को निकालने के लिए अगेन वी आउट को अपने वी आई से रिलेट करना है। सो दैट मीन्स कि दिस सर्किट इज गुड फॉर दैट पर्पज एज वेल, क्योंकि ये यहाँ पर वी आउट भी है और वी आई भी आपका मौजूद है। सो ए वी निकालने के लिए आपको प्रैक्टिकल सिग्नल सोर्स इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आर सिग्नल वी सिग्नल, बल्कि दिस सर्किट कैन बी एनालाइज्ड एंड वी कैन डिटरमिन ए वी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्किट। सो ए वी निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए वी निकालने के लिए लेट्स अप्लाई KCL at this node. By passive sign convention, this current must be in this direction, क्योंकि V out हमने यहाँ पर लेबल की हुई है। So let's apply KCL. You can see that इस node के ऊपर you have just two currents exiting the node. So by KCL we have GM VBE is the current exiting the node, and also V out over R naught in parallel with RC in parallel with RL is the current exiting the node. There is no current entering the node, so this must be equal to 0. So V out over R naught in parallel with RC in parallel with RL must be equal to minus GM VBE. But we have already established that VBE and VI are the same in this circuit. So this is minus GM VI. Or in other words, we can say that V out over VI
which is defined as AV because RL is connected in the circuit, RL is part of the circuit. अगर RL को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर लेते तो ये फिर V out over VI AV नॉट को रिप्रेजेंट करता. So this is equal to minus GM R naught in parallel with RC in parallel with RL. ये आपके पास AV आ गया. नोट करें कि गेन इज नेगेटिव. Why gain is negative? Because we do expect a negative gain in common emitter amplifier topology, and this is a common emitter amplifier topology. तो ये आपके पास AV आ गया. AV naught क्या है? AV naught is V out over VI when RL is infinity, when RL has been replaced by an open circuit. Okay, so actually AV naught is just AV with RL substituted as an open circuit. So look at this relation. What do you expect? पहले बल्कि ये आंसर दीजिए कि आपके पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, R1 है और इन्फिनिटी है. What do you expect at the input? Infinity, what does infinity? Let me redraw. Infinity means an open circuit, right? So R1 and an open circuit. What do you expect at the input? What is Rn? Sir, equal to R1. R1, right? So open circuit, placing an open circuit in parallel with a resistor will not change the value of the input resistance. Input resistance will be equal to R1. So AV naught फिर क्या लिखूँ? इधर भी आपके पास RL infinity is becoming in parallel with RC in parallel with R naught. So what should be the value of AV naught? हाँ जी, एक्सप्रेशन क्या? GM R naught. Minus GM R naught R naught. in parallel with RC. RC, right? यहाँ पर देखें आपने जस्ट इसको इन्फिनिटी से रिप्लेस किया है ना. सो दिस एक्चुअली दिस इन्फिनिटी इज अपीयरिंग इन पैरेलल विद R naught एंड RC, यानी ये कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसके साथ पैरेलल में ओपन सर्किट आया है. सो ओपन सर्किट इन पैरेलल विद दिस सम वैल्यू विल बी इक्वल टू सम वैल्यू. सो AV naught is just, यानी the point is कि once you have determined AV, you can very easily determine AV naught by just substituting RL as infinity or open circuit in the expression for AV. So AV निकाल, once आपने निकाल लिया तो AV naught निकालना is very straightforward. Just substitute RL as infinity or open circuit in the expression for AV. So अभी आप देख सकते हैं कि हम Rn निकाल चुके हैं, हम AV निकाल चुके हैं, हम AV naught निकाल चुके हैं. Let's now determine GV. So GV is V out over V signal, and since हम already working कर चुके हैं V out over VI की, so let's reuse that working. So we can rewrite it as V out over VI. यहाँ पर देखें VI cancel हो जाएगा and you are just left with V out over V signal. So this is actually AV which we have already figured out. So VI over V signal times AV. For any amplifier circuit, you can draw this sub-circuit V signal, R signal, Rin, where Rin is the input resistance of that particular amplifier circuit. This sub-circuit is true for any amplifier circuit, लेकिन naturally Rin की value specific होगी उस particular amplifier circuit की. For example, इस circuit में Rin हमने निकाल ली है और वो R pi है. So ये सब सर्किट हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इस सब सर्किट को हमने क्यों ड्रॉ किया, ताकि हम वोल्टेज डिवाइडर की मदद से VI और V सिग्नल निकाल सकें. सो इट इज इक्वल टू Rin डिवाइडेड बाय Rin प्लस R सिग्नल. Rin we have already determined, R pi plus R signal. So this means GV is equal to R pi divided by R pi plus R signal times AV. AV हमने ऑलरेडी निकाल ली है, जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू हियर एंड राइट द फाइनल रिजल्ट. ठीक है, AV हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले पेज के ऊपर, तो AV की वैल्यू यहाँ पर जस्ट पुट करें एंड यू गेट द फाइनल रिजल्ट. So you can see that we have determined all three kinds of gains: AV naught, AV, and GV. We have also determined Rin. The only thing left to determine is capital R naught.
अब जस्ट हमारे पास कैपिटल आर नॉट रह गया निकालने वाला, राइट? सो लेट्स डिटरमिन कैपिटल आर नॉट एज वेल. सो कैपिटल आर नॉट के लिए आपका सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से. सो वी हैव जी एम वी बी ई, वी हैव आर पाई, base is grounded, we have RC in parallel with RL in parallel with R नॉट. वही सेम मैंने सर्किट दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि अब हम उसको देख सकें और कैपिटल आर नॉट के लिए देखेंगे क्या तरीके है. और हमने जिस तरह पहले बात की है कि हमने यहाँ पर ये सिग्नल सोर्स है, राइट? सो दिस इज अ सिचुएशन. सो कैपिटल आर नॉट के लिए क्या तरीका है? कैपिटल आर नॉट के लिए तरीका ये, द फर्स्ट स्टेप इज you need to remove RL, and instead of RL you need to apply a test source. So what we are saying is कि RL यहाँ पर पैरेलल में अपीयर हो रही थी, उसको आप हटा दें और उसकी जगह एक टेस्ट सोर्स अप्लाई करें. पहले R नॉट किस तरह अपीयर हो रही थी? इस तरीके से. RL जो है इस तरीके से आ रहा था, तो RL की जगह हमने एक टेस्ट सोर्स अप्लाई करना है. So instead of RL we are going to apply a test source. Let's call it Vx. Let me apply a voltage source as the test source, and I'm going to determine this current Ix, and the ratio of this current will give me capital R naught. So R naught is Vx divided by Ix, and also I need to suppress the independent source Vi. Vi must be equal to 0. So ये आपने key steps करने हैं. You remove RL, you place a test source Vx instead of that RL, and you set Vi equal to 0. That will give you the value for capital R naught. So जब आपने Vi को 0 सेट कर दिया तो यहाँ पर जरा देख के बताइए Vb क्या हो जाएगा? Vbe की क्या वैल्यू हो जाएगी? What is the value of Vbe if you set Vi equal to 0? हाँ जी, सर 0. 0 हो जाएगी, राइट? सो Vbe इज इक्वल टू, अगर Vbe 0 हो गया तो ये इस करंट सोर्स की वैल्यू भी 0 होगी, राइट? अगर करंट सोर्स की वैल्यू 0 है तो उसका क्या मतलब है कि इट इज इफेक्टिवली एन ओपन सर्किट. So what we are saying is that when we set Vi equal to 0, Vbe will become equal to 0, and as a consequence Gm Vbe will be also equal to 0. And what we are saying is that we have a current source with a value of 0 current, which means it represents an open circuit. So अब अगर ये open circuit हो गया है तो you are just left here with a test source along with the resistor. So ये जो resistance capital R naught है from this circuit, it is just R naught is equal to RC in parallel with small r naught. So ये आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू एनालिसिस के बाद हमें मिली है. कैपिटल R naught is RC in parallel with small r naught. So अब हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो गई है. We have determined the input resistance, we have determined 3 types of gains, AV, AV naught and GV, and we have determined the output resistance capital R naught. And we have completed the analysis for the given common emitter amplifier circuit. So ये इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं और तमाम AC पैरामीटर्स निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट टाइम हम फोकस करेंगे इसी कॉमन एमिटर की एक वेरिएशन पे जिसको हम कहते हैं कॉमन एमिटर विद RE. देन वी आर गोइंग टू लुक एट कॉमन बेस टोपोलॉजी, एंड फाइनली वी विल सॉल्व द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर. सो आज के लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं. अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं.